हे एवरीवन, वेलकम टू इंटर्नशिप अलर्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेब डेवलपर रोल एट क्लाउड एनालॉगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप नए हो इस चैनल पे, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे टाइमली। लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। क्लाउड एनालॉगी इज हायरिंग फॉर वेब डेवलपर। जो जॉब होगी वो फुल टाइम रहेगी एंड जॉब लोकेशन विल बी नोएडा। बात करते हैं अगर एक्सपीरियंस की, तो 1 to 2 year ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो एंड लुकिंग फॉर जॉब चेंज, देन दिस अपॉर्चुनिटी विल बी बेस्ट फॉर यू। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, वेब डेवलपर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ensure that site meets user expectation by ensuring they look good, run smoothly, and offer easy access points with no loading issues between pages or error messages. Basically ये इन्होंने एक short overview दिया है about a web developer role. Coming to the responsibilities, to excel in this role of PHP developer, you should have 1 to 2 years of hands-on experience with PHP development and उसके framework भी Laravel, Codelniter and Cake PHP. Then after proficiency in JavaScript, jQuery, HTML, CSS and CMS में है WordPress, also Laravel, API integration and MySQL. Then after strong problem solving skills and the ability to work independently or in a team, and excellent communication skills to collaborate effectively with colleagues and clients. Then coming to key skills or experience, a minimum of 1 year of experience in designing and developing websites and web application, good knowledge of HTML, CSS, PHP, JavaScript and WordPress, strong portfolio which demonstrate a range of work and technique, passion for strong web design that deliver a great user experience, good understanding of latest web design trends, experience with responsive design would be a bonus. वेबसाइट में responsiveness add करना बहुत important है, so make sure that you also know the responsive design. Then after strong attention to detail and creative flair. This is all about web developer role at Cloud Analogy. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकंड है फॉर HR जर्नलिस्ट, ये भी क्लाउड एनालॉगी में है, फुल टाइम जॉब रोल है एंड लोकेशन विल बी कुरुक्षेत्र। एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। बीइंग अ HR जर्नलिस्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होंगी? कोऑर्डिनेट फॉर इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, कंपाइल एंड अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, process documentation and prepare reports relating to personal activities, undertake employee engagement activities and policy driven process for various celebration, and coordinate in HR projects, deal with employee requests regarding human resource issues, rules and regulations, maintain employee database and keep it up to date, update the HRMS with latest employee information, and assisting in PMP process for its completion as per timeline. This is all about roles and responsibilities for being a HR journalist at Cloud Analogy. इसके अलावा बहुत सारी ओपनिंग अभी निकली हुई हैं क्लाउड एनालॉगी में, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 ओपनिंग है फॉर HR जर्नलिस्ट, जिसको अभी डिस्कस किया है। सेकंड इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट इज मार्केटिंग में कंटेंट राइटर एंड सोशल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। थर्ड है प्रोफेशनल सर्विसेज में SC एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्सफोर्स कंसल्टेंट एंड सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट। फॉर SFC वेब डेवलपर, जिसको अभी डिस्कस किया है, एंड सेल्स में है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड अकाउंट एंड सेल्स मैनेजर। Thank you for your time and please do subscribe our channel for latest update regarding jobs, internships, hackathons, online free courses and much more. Until next time, keep learning, stay creative and thrive in your development journey. Goodbye.